Hi everyone, today we will see gate level modeling. So here I will tell you what is gate level modeling and how we can use it and how we can write basically design in using gates. So in this now what we will do actually is we will design any kind of digital circuit using gates only. Okay, सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज़ गेट लेवल मॉडलिंग. तो पहले हम देख लेते हैं कि गेट लेवल मॉडलिंग होता क्या है बेसिकली. सो आई हैव रिटन हियर डेफिनेशन. गेट लेवल मॉडलिंग इज अ लो लेवल हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन in Verilog. Okay, where what we are doing here, circuit is described using logic gates. So you already know guys how many logic gates we have. It's like AND gate, OR gate, NOT gate, etc. Using these gate we will design digital circuit, and basically we can say like using these gates we can describe digital circuit behavior. Okay, now connection between wire and gates are written explicitly. So if you see here like this is one gate and this is another gate, so here whatever the connection you are mentioning now, this will be established by using wires. So here we will use wire to connect multiple gates input outputs. Okay, it is a lower level than RTL transfer. Means what we have like I told you earlier, RTL is something register level, register transfer level. This is also a design. This is also a basically you can say ये भी एक ऐसा तरीका है जहाँ पे हम डिजिटल सर्किट बिहेवियर को लिखते हैं कोड के फॉर्म में. ओके, सो इन सिंपल वर्ड बेसिकली यू कैन से गेट लेवल मॉडलिंग is nothing but building the digital circuits using gates. That's it. So we write exactly what physical gates exist inside the chip. So basically suppose you want to perform this logic a b plus b bar c. So this is your function and you want to write the that Verilog code for this. So what you have to do here is this is what, this is nothing but a and b, right? And this is what or, and this is not, and then here you have to write c, that is end with b bar. So this is what actually is, this is here you have to use AND gate, this is what OR gate, and adjective we will implement in a code. Okay, and here you should make a NOT of B and then you have to do AND. So like see how many gates we have used, 1 2 3 4. So total 4 gates we have used to implement this function. Okay, similarly in this gate level modeling now we will use this kind of gates only to implement this kind of functions, or you can say this kind of digital circuit behaviors. Okay, now we will see forward what is there. So gate level modeling syntax. Now you can see the syntax basically. Verilog provide built-in gate primitives for gate level modeling. Now you can see like तुम बोल सकते हो कि तुम्हें ये इनबिल्ड मिल रहा है गेट, राइट? जो भी गेट्स है ना वो इनबिल्ड मिल रहा है, बस उसको लिखना है. एंड लिखना कैसे है मैं बताता हूँ. उसके लिए तो अपने पास सिंटेक्स निकल करके आता है एंड उस पर हम देखेंगे कि कैसे लिखते हैं. तो देखो सबसे पहले लिखना पड़ेगा तुम्हें गेट टाइप. तो गेट टाइप सपोज ये एंड है, तो इसको अगर लिखना चाहो ना तो तुम ऐसे लिख सकते हो. ये तुम्हारा हो गया एंड, ठीक है, एंड लिखा. उसके बाद तुम्हें नेम देना पड़ेगा, राइट? तो तुम लिख सकते हो ये क्या लिख रहे हो, तुम एंड गेट का लिख रहे हो ना, तो लिखो एंड अंडरस्कोर गेट. अब ये मैं बता चुका हूँ कि ये नेमिंग कन्वेंशंस कैसे लिखते हैं, ये मैं पहले से बता चुका हूँ. नाउ तुम्हें पता है कि अगर तुम लिख रहे हो y इज इक्वल्स टू a डॉट बी, तो इसमें इनपुट्स कौन सा है, ये इनपुट हो गया, ये भी तुम्हारा इनपुट हो गया एंड ये तुम्हारा आउटपुट हो गया. तो तुम इस तरह से मेंशन करोगे आउटपुट क्या है यहाँ पे y, और उसके बाद तुम क्या लिखोगे, इनपुट तुम्हारा कौन सा हो गया, एक तो a हो गया एक b हो गया. तो इस तरह से तुम लिखोगे, राइट? ये हो गया तुम्हारा a एंड b. सो दीज आर इनपुट्स एंड दिस इज योर आउटपुट. तो इतना लिखने से ना इतना ही लिखने से तुम्हारा जो कोड है वो उसको समझ में आ जाएगा कि तुम यहाँ पे एंड गेट लिखना चाह रहे हो. तुम्हारा जो कंपाइलर है उसको समझ में आ जाएगा व्हाट यू वांट टू राइट एक्चुअली. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो अपने पास कुछ गेट्स है
जिसको हम देख लेते हैं। तो देखो तुम्हारे पास एंड गेट होता है, ठीक है, तो और गेट होता है, एक्सॉर होता है, नैंड होता है एंड नॉर होता है। सिमिलरली देखो कौन सा गेट का प्रिमिटिव यहाँ पे है, ऑलरेडी डिफाइंड है, ये बात कर रहा हूँ मैं। तो सपोर्टेड गेट्स, तो एंड हो गया, और हो गया, नॉर हो गया, नैंड हो गया, उसके बाद एक्सनॉर हो गया, नॉट हो गया, बफर हो गया, ये सब चीज़ यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे गेट्स सपोर्टेड है जो कि हमें चाहिए किसी डिजिटल सर्किट के बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए, करेक्ट। तो अब देख लेते हैं वन बाय वन कि हम बेसिकली गेट लिखेंगे कैसे। ये बेसिकली तुम बोल सकते हो ये तुम्हारा एग्जाम्पल है जहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि कैसे लिख सकते हैं एक्चुअली। तो देखो यार, पहले अगर बात करते हैं एंड गेट का, तो देखो एंड गेट क्या होता है सबको पता है, राइट। ऐसा होता है एंड गेट, ठीक है, ये तुम्हारा ए एंड ये तुम्हारा बी एंड दिस इज योर वाई। तो क्या है, परफॉर्म लॉजिकल एंड ऑफ 2 और मोर इनपुट्स। तो अभी तो मैं 2 दे रहा हूँ, 3 4 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इफ ऑल इनपुट्स आर 1 देन आउटपुट विल बी 1, राइट। यू नो वेरी वेल लाइक हाउ टू राइट ट्रूथ टेबल फॉर एंड गेट, यू नो वेरी वेल, राइट। अदरवाइज 0। तो हर दोनों इनपुट 1 होना चाहिए, तभी जा करके आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। इफ एनी इनपुट इज 0 मीन्स आउटपुट विल बी 0, ओके। सो यहाँ पे हमें लिखना है एंड लॉजिक, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, एंड। तो क्यों एंड लिख रहा हूँ, क्योंकि ये एंड गेट है। उसके बाद यहाँ पे नेम दे रहा हूँ, राइट। गेट का नेम चाहिए, गेट का नाम तो देना पड़ेगा ना, उसके बिना कैसे लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा आउटपुट, जो अगर ये एग्जांपल कंसीडर कर रहे हो तो इसमें वाई आउटपुट है एंड ए बी इनपुट है। तो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी एंड यहाँ पे क्या हो जाता है, तुम्हारा वाई हो जाता, राइट। अब चलो इसका कोड देख लो बेसिकली कैसे लिखना है कोड। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग्स विच यू शुड नो हाउ टू राइट इट। नाउ module, you know why we are writing module now very well. Then I am writing a module name, that is your end example, end underscore example. It means what, it's making, see, name, always name should make sense. Why? Because by reading this name only na, you will get to know what is inside and what this behavior will do, what this code will do actually. So end example means it's making sense, like we are writing end get example. Okay, now we are saying res A and B. So you know why we are writing res here, res A and B as an input and wire as a output, that is your Y. Now here you are saying like, see, this is your AND gate and I am giving name as G1, that is AND gate name, and this is your output and this is input. Okay, you got it. So this will do what it will do actually, this will do this kind of operation. So this logic will perform this kind of operation, y is equals to a and b, okay. उसके बाद हाँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डिफरेंट सेट ऑफ इनपुट्स के लिए आउटपुट देख रहा हूँ। तो बताओ अगर a एंड b 0 है तो इस केस में क्या हो जाएगा, आउटपुट भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये 0 है और b 1 है तो भी इस केस में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अच्छा, a एंड b दोनों 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अभी इसमें एक चीज़ दिख रहा होगा, ये हैश 1 हैश 2 हैश 1 करके, इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली ये डिले है, इसके बारे में अपन आगे देखेंगे, ये पूरा डिटेल में है, इसके बारे में तो देखेंगे ही। अभी के लिए जैसे समझो ये डिले दे रहा हूँ मैं, राइट। अब अगर और गेट का बात करते हो तो देखो और गेट कैसा है, इफ़ एनी इनपुट इज़ 1 आउटपुट विल बी 1, यू नो वेल। नाउ सेम देखो मॉड्यूल और एग्जाम्पल, तो और एग्जाम्पल बिकॉज और गेट वी आर राइटिंग। नाउ वी आर डिक्लेयरिंग वेरिएबल रेज इनपुट ए बी एंड वायर इज योर आउटपुट वाई। सेम देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, और सो दिस इज टेलिंग दैट दिस इज और गेट एंड दिस इज द नेम ऑफ दिस गेट एंड दिस इज योर आउटपुट इनपुट। अगेन वी आर अप्लाइंग दिस set of inputs and we are checking the results. So in this case tell me guys, result, what will be the result actually in this case? So in this case you will see the result is here, if both are 0 0 means this will be 0, right, 100%. If any of the input is 1, output will be 1, so here it will come 1. If both the input is also 1 then also output will be 1. So in this case only one input is high, but that also means output will high. Okay, I hope तुम्हें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं यार, अभी XOR के बात कर लेते हैं। XOR में क्या होता है बताओ। तो अपने पास XOR करके आ गया। अब देखो सेम टू सेम है, मैं अगर बताना चाहूँ तो अभी टाइम लगेगा। मैं चाह रहा हूँ कि तुम
इसको खुद से करो। वाई, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ, और एक्सॉर गेट है, डेफिनेशन, इफ इनपुट्स आर डिफरेंट आउटपुट विल बिकम हाई। व्हाट डज इट मीन? if inputs are same output will be 0, means 0 0 output will become 0. What is this? What is actually this means? X or and 1 1 means output will be 0. Basically this is nothing but a odd numbers, odd ones or zero detector, odd ones detector, you can say like. So if 0 1 means it will give 1, 0 1 0 means it will give 1, right? Odd number of ones detector, you can say like that. Now the code you can realize, you can analyze the code actually. How? This is the module, this is module name XOR, and this is the variable res a b and wire. Now see, this is the things which we are covering in this chapter actually. These things already we have covered, right? Module, how to declare a variable. So here I am saying that you should be XOR, and this is the gate name, and this is the input, and this Y is your output. I told you like output first you have to write, then input. Okay, now we are applying different set of inputs. So both are 0 0 means output, what output will come? 0, obviously, because the definition is saying, right, if any of the input is 0, any of the input is 1, and another is 0, not any of the one means. So like see, this is 0 and this is 1, so it will become 1, right? Because here see, 0 XOR with 1, so it will come 1. 1 XOR with 1 means, because both are same na, so it will be 0 actually, so this will be 0, right? Similarly you see NAND gate. What is the NAND? And here you have to put one NOT gate, so this will become the NAND actually. Now see, opposite of AND is saying like if and A and B is 1, output will become 0. Why? See, 1 and 1 will become here 1, and 1 of the NOT is 0. So if you take NOT of input 1, it will become 0, right? So if you see here, and module NAND example, in this I am taking two variable, reg and wire. So reg I am saying as reg I am taking as an input, that is A and B, and wire I am taking as a output, that is Y. Now I am saying NAND. Why NAND? Because it's a NAND gate logic, that's why NAND. Then gate name, NAND gate name G1 I am saying, you can take anything, right? You can take like NAND and underscore gate. Okay, that's it, you can take any name. Then you are mentioning output and input. Okay, now you are applying different set of inputs, and you are seeing the outputs. So when 1 and 1 is equals to 1, but you have to do NOT, right? So it will become 0. So when input A and B is 1 now, that time the output will become 0. When A is 0 but B is 1, what does it mean? Means NAND gate output will be, AND gate output will be 0, but NAND gate output will be 1. So here it will come 1. Okay, let's move further. Now we have NOR gate. So it's a opposite of OR. So see, you can analyze this code. I am giving as homework this one. Okay, this is homework. You can analyze and see the output and how actually this code written. And you should, what you can do apart from this, you should practice this code. I already told you how to use GoStaSim, everything I told you, and even in future lecture I will tell you step by step how to use it. Okay, even though I will execute these kind of codes, so don't worry for that. But what I want from you is you should also run this code on GoStaSim, and you should see the result how it is coming. Okay, some people are asking me that can you make a video how to use GoStaSim? Obviously I'll make a video, but now whatever the video I uploaded now, in those video I told you like how to use that GoStaSim. Okay, so if you are following my series now, then you know that I told you how to use the GoStaSim. Okay, this is an example. Now I'll tell another example you should see, and you should do from your side, that is your NOT gate. Okay, so now what you have to do is you should run this code. See, type this code
and save in a file and run this code on CostaSim and see the result how it is coming. Okay, so here I am applying only 2 inputs. You can apply multiple. So in above case also I was applying 2 only. So see, if input is two na, like A and B, so in this case 2 to the power 2 means 4 possible input value you can use. So in this case now I am using 2 only. You can use 4 set of values, no issue. Okay guys, so in the next lecture we will see gate delays. So I told you that delay is also an important concept. Like I've already told you in previous, like this is what delay is. Okay, so in our next lecture I will tell you how to write delay and what is the meaning of this. Actually these kind of things you will see in a next video. Okay,